अगर तो हम जेंडर स्टडी की बात करें तो जो जेंडर स्टडी है ये ना एक्चुअल डिफरेंस कर रहा होता है फ़िज़िकल और बायोलॉजिकल जेंडर डिफरेंसेस में। यानी कि मेल और फीमेल में जो फ़िज़िकल और बायोलॉजिकल फैक्टर होते हैं ये उनमें डिफरेंशिएट कर रहा होता है। और ये प्रिंसिपल जो होता है ना सोसाइटी का कल्चर और प्रिंसिपल उसको डिफ़ाइन कर रहा होता है। और ये एक रिमार्केबल टूल है जो कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेबर, केयर और पोसेशन, इनकम, एजुकेशन, ऑर्गेनाइजेशन, क्वालिटीज़ और डिजीज़ इसको डिस्कस कर रहा होता है। अगर तो हम इसके पर्सपेक्टिव की बात करें तो ये मेल और फीमेल को आइडेंटिफाई करता है उनके कलर की बेस पे, उनकी शेप की बेस पे, उनकी डिज़ाइन की बेस पे, उनकी इमेजिनेशन की बेस पे। और इसके अलावा ह्यूमन प्रोडक्ट्स यानी कि उसके क्लोथ्स, एसेसरीज़, कंप्यूटर डिज़ाइंस, इसकी बेस पे उसको डिफरेंशिएट कर रहा होता है। सोशल एंड कल्चर जेंडर पैटर्न्स ये वो इंटरनलाइज्ड एक्सटेंट इमेज है सोसाइटी का जो कि मेल और फीमेल में इंडिकेट कर रहा होता है। अगर तो हम जेंडर स्टडी की अंडरस्टैंडिंग की बात करें तो जेंडर स्टडी नॉर्म्स को रिप्रेजेंट करती है। नॉर्म्स जो है ये एक बिहेवियर की किस्म है एंड पैटर्न्स और बिहेवियर एसोसिएटेड विद masculine and feminine. Study the features of these norms and patterns. अगर तो हम इस पे फोकस करें जेंडर स्टडी पे तो जेंडर स्टडी अगर हम डेफिनेशन देखें तो जेंडर स्टडी lays emphasis upon actually existing men and women differences. It is significant because within gender studies there is a recognition that men and women do not exist in isolation from their other social roles and positions. Caste position, religious identity, sexual identity, man and many more. All of these factors impact her life and must be considered while studying in appointed chapter on the book. As a field, women and gender study integrate feminist theories and practices the challenges socio-economic, philosophical, representational and political हायरार्कीज़। अगर तो हम वुमेन स्टडीज़ की बात करें तो वुमेन स्टडी इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी एकेडमिक फील्ड डिवोटेड टू टॉपिक कंसर्निंग वुमेन, फेमिनिस्ट, जेंडर एंड पॉलिटिक्स. इट ऑफन इंक्लूड feminist theory, women history, history of women suffrage and social history, women fiction, women health, of humanities and social sciences. Early on courses drew especially on history, literature and sociology, but they quickly expand to other humanities. History and evolution. Women study is a term used to refer to the theory and practice of feminist research and teaching in the academy. The first women studies course is purported to have been created by American historian Richard Baird, who in 1934 constructed a 54-page syllabus for a course titled A Challenging Political Economy as Its Effects on Women. Although the course were never taught, it is prepared the foundation for the development of the first women study program in the United States. Development of women studies. Development of women studies as an area of academic study came into being during the emergence of feminism, second wave, and the new dawn of political activism. The first courses were developed in the late 1960s in the USA, and although some courses were present in an adult and higher education in the UK, it was not until 1980 that was the first master degree in the women and was offered in the University of Kent, followed by other master and undergraduate degrees elsewhere. San Diego University program was formally approved in 1970. San Diego जो है ये यूनिवर्सिटी है यूएसए में. This growth in academic programs has been parallel and perhaps exceeded by a growth in the published literature on women's studies, much of which has been dealt with the description and analysis of emerging field as women's studies, the basics. At present, the consensus is that women's study is and always been interdisciplinary, यानी कि ये interdisciplinary होती है. Since 1970, scholars of women's studies have taken postmodern approaches to understanding genders.
as it intersects with race, class, ethnicity, sexuality, religion, age, and an ability to produce and maintain power structure within society. Within turn of events, there has been a focus on language, subjective, and social subjects of lives.